Hi, good afternoon, everyone. Good morning, rather. Good morning, everyone. So, beta, we are meeting after some time now because we had a Durga Puja break, and probably abhi the class, these sessions will be a bit uneven. So we have still some festivals upcoming like Diwali and Bhai Dooj, but uske baad I will try to go ahead and I'll try to maintain consistency in these sessions. Okay. So, if you refer back to the last session that I had taken on CUET strategy, we had gone ahead and we had talked about what you should begin from macroeconomics. ठीक है, हमने माइक्रो को एक हॉल्ट दिया था and we had started talking about what you should be doing from macroeconomics perspective, right? And I had told you to go ahead and to begin with the national income accounting. Okay. So what is done in the last strategy class is national income accounting. बेटा इस पर I will post MCQs based on this today. ठीक है, I will be posting MCQs based on national income accounting today, and you can go ahead and you can practice those MCQs. ठीक है, इस पे I will post 100 MCQs. अभी भी I will take some questions. I will just give you now. आप एक बारी उन questions को try कर लेना. ठीक है. But now, what should you be doing for the next session? माने कल के लिए आपको क्या पढ़ के आना है, what you should be revising. That is what first of all I want to go ahead and I want to inform all of you. So कल के लिए all of you will go ahead and study simple Keynesian model. सब बच्चे सिंपल Keynesian मॉडल को अच्छे से you will go ahead and you will study that and come in the tomorrow's class. ठीक है, अब बेटा ये सिंपल Keynesian मॉडल many of you will go ahead and ask me, मैम ये कहाँ लिखा है सिलेबस में? Where is this mentioned in the syllabus? Right? If you go to macroeconomics syllabus, it says income and output determination. But where is simple income account, simple Keynesian model written in the syllabus? तो बेटा दिस इज पार्ट ऑफ इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन. ये पहली चीज है जो हम इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन में पढ़ाते हैं, राइट? दैट इज द सिंपल Keynesian मॉडल. So all of you will go ahead and all of you will study this simple Keynesian model. And exactly क्या पढ़ना होगा इस simple Keynesian model में? So all of you will study first how do we write the consumption function. What is marginal propensity to consume, marginal propensity to save? What is autonomous consumption? ये क्या होता है? All of you will go ahead and all of you will study what is the savings function, right? All of you will go ahead and all of you will study what is government policy multiplier. इसमें आप अलग अलग केसेस करोगे with no tax, with autonomous tax, with proportionate tax. ये तीनों, these three types all of you will do, है ना? अच्छा, while doing this, हाँ, you have to go ahead. Hello बेटा, hello. इसमें if you want to practice these questions based on government policy multiplier, तो इसका best practice, MCQ practice can happen from JNU past years.
बेस्ट प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो आप जेएनयू के पास्ट ईयर्स के थ्रू कर सकते हो, बिकॉज दे हैव एक्सीलेंट क्वेश्चंस ऑन मल्टीप्लायर। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू विल लुक इनटू दोस क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस देम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आई होप ऑल ऑफ यू नो द फॉर्मूलाज ऑफ दीज मल्टीप्लायर्स। ठीक है, तो यू हैव टू रिवाइज दीज फॉर्मूलाज। इसके बाद you have to revise what is balanced budget multiplier। प्लीज बेटा अच्छे से देख लेना कि हम बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर हाउ वी डिराइव इट, कैसे हम उसका वैल्यू निकालते हैं, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर इज वन। ये वाला पार्ट भी आप अच्छे से करोगे। इन केस यू वांट टू रेफर टू वन चैप्टर फॉर दिस, तो इसके लिए यू कैन गो अहेड एंड यू कैन रेफर टू डॉन बुश। Dornbush में depending on different editions of the book, different versions of the book, this should be chapter 9, income and spending. Name of the chapter बेटा income and spending है। अब chapter number अलग अलग version में अलग अलग हो सकता है, but the name of the chapter is income and spending। Very well written chapter, बहुत अच्छा chapter है। It thoroughly explains you all this thing जो भी मैंने यहाँ लिखी है वो सब कुछ ये अच्छे से explain करता है। So you can go ahead and you can do this in detail। ठीक है, so this is it what I wanted to cover for today's class। आप अच्छे से कंजम्पशन फंक्शन पढ़ोगे, सेविंग्स फंक्शन पढ़ोगे, इक्विलिब्रियम इनकम कैसे निकलता है वो रिवाइज करोगे। उसके बाद आप गवर्नमेंट पॉलिसी मल्टीप्लायर पढ़ोगे, टैक्स पॉलिसी मल्टीप्लायर पढ़ोगे, एंड फाइनली यू विल स्टडी अबाउट बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर। ठीक है, दिस इज व्हाट कैन बी आस्क्ड इन द अपकमिंग एग्जाम। इसको बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करना जरूरी है। Indirectly through these sessions I am also telling you what is important from each chapter। हर चैप्टर में से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या एग्जाम में आ सकता है, आई एम ऑल्सो गोइंग अहेड एंड डिस्कसिंग दैट विद यू। सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल गो अहेड एंड ऑल ऑफ यू विल कवर दोज टॉपिक्स, नो वन विल लीव दोज टॉपिक्स। ठीक है, ओके बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस। आप उसको मेरे को आंसर करने की, you'll answer them in the chat window। Okay, so question, which of the following is not included in national income? Which of the following is not included in national income? Rent received by landlord, commission earned by broker, scholarship earned by student, profit earned by company। Try to answer it in the chat window. Which of the following is not included in national income? Try to answer this. Which of the following is not included in national income? Exactly. Scholarship, क्योंकि scholarship के against there is no economic activity, no good or service is getting produced, तो scholarship should not be a part of national income। ठीक है, ओके बेटा, सेकंड क्वेश्चन ये कहता है that in 1 year nominal GDP increases by 10% and GDP deflator by 8%। Growth of real GDP will be 18%, 10%, 2%, 1.85%. Right? So in 1 year, nominal GDP is growing by 10% and GDP deflator by 8%. You have to tell me by what amount will the real GDP be growing. Try to answer this question, beta.
What will be the answer to this question? Okay, तो बहुत सिंपल है बेटा. What is the formula of GDP deflator? GDP deflator is nominal GDP by real GDP. Nominal GDP by real GDP. तो जब हम whenever we change it in percentage terms, जब हम growth लिखते हैं तो ये हो जाता है growth rate of GDP deflator because this is division. तो जब हम परसेंटेज टर्म्स में लिखते हैं या व्हेन वी राइट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है. सो ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर विल बी ग्रोथ रेट ऑफ नॉमिनल जीडीपी माइनस ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीडीपी. तो बेटा नॉमिनल जीडीपी इज ग्रोइंग बाय 10%, तो माने यहाँ पे आ गया 10. जीडीपी डिफ्लेटर इज ग्रोइंग बाय 8%, माने यहाँ पे आ गया 8. And this will be minus GR. So the real GDP will be growing by 10 minus 8, which means 2%. 10 minus 8, which means 2%. So growth rate of real GDP will be by 2%. So answer will be C. Answer हो जाएगा C, 2%. ठीक है? That will be the right answer. ठीक है? Let's take one more question, beta. So beta, we are not finding the exact growth rate. You have to find the approximate growth rate. So approximately the growth rate is 2%. ठीक है? Exact growth rate भी निकल सकता है, right? Exact growth rate will be 1.85. कैसे? You can do nominal GDP is growing by 10%. So let's say that in initially both real and nominal GDP of base year are 100. अब nominal GDP कितने से increase हो रहा है? Nominal GDP is increasing by 10%. So which means 10% of 100 will be 10. So new nominal GDP will be 110. New nominal GDP will be 110. We don't know what new real GDP is. Let new real GDP be X. And new GDP deflator. बेटा जीडीपी डिफ्लेटर कितने से इंक्रीज हुआ है? जीडीपी डिफ्लेटर हैज इंक्रीज्ड बाय 8%. तो न्यू जीडीपी डिफ्लेटर विल बी 108. तो 110 डिवाइडेड बाय x into 100 is 108. तो x will become 110 divided by 108 into 100. ठीक है? So when you will solve this, आप इसका एक बारी आंसर निकाल सकते हो. So let's just try and do this. So 110 divided by 108 into 100. This is going to give me 101.85. Right? So therefore, growth rate of real GDP will be 101.85 minus 100 divided by 100 into 100. It will come as 1.85%. Beta, this is exact. ये है approximate. One is approximate and one is exact. तो अगर क्वेश्चन बोलता है कि the approximate growth of real GDP is, माने you are supposed to use this formula. This gives you an approximate rate. If the question asks you the actual growth rate of real GDP, then this is the correct answer. ठीक है? Then it will be this. I hope it is making sense to all of you. तो दोनों आंसर ही करेक्ट है, बट क्वेश्चन है कि क्या वो अप्रोक्सीमेट पूछ रहे हैं या क्या वो आपसे एक्चुअल पूछ रहे हैं. बेस्ड ऑन दैट यू विल गो अहेड एंड यू विल आंसर. बेटा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस I have added in your MCQ. In the 100 question MCQ that I declared,
इस MCQ पेपर में you will have all these questions included. Don't worry. ठीक है? This is just some sample questions which I am giving you for your practice. ठीक है? ठीक है. So now, beta, I hope all of you will do those MCQs questions by tomorrow. Plus, आप simple Keynesian model को revise करके आएंगे. Tomorrow, I am going to go ahead and give you MCQ based on simple Keynesian model. And then we will also go ahead and do a very quick test like today. ऐसा एक छोटा सा हम test भी रख लेंगे. ठीक है? Okay, beta. Thank you.